Assalamualaikum, welcome to CEO Club Pakistan. I'm Noshin Tariq. I have a very present personality today with us, and he is Jalal Meghani, heading AdamJee Life Assurance. Assalamualaikum, sir, and welcome to CEO Club Pakistan. Pleasure. First of all, thanks for being here with us today. So, sir, let's start with your professional journey. How you take off? Uh, I was approached by Hollard International, a South African insurance company, were interested in having a joint venture with AdamJee Insurance, who wanted to have life insurance business as well, alongside with general insurance. Okay. Because by 2008, each major general insurance company had its own life insurance company, like EFU, Jubilee. So AdamJee was a late entrant in life business, and they wanted to do it in collaboration with Hollard International South Africa. So they were approached, rather they approached me to work with them, and they found out my credentials and profiles from East Africa, because they were based in South Africa. So I was one of the founder member. I won't say the founder member, one of the first couple of employees who started journey in AdamJee Life. Okay. When I joined, and there was not even a license to do business with AdamJee Life, so we worked along. In fact, the CEO was South African, Frederick de Beer, and I was appointed as a chief financial officer. So we worked both together and started working towards obtaining a license, and then we started business in 2009, somewhere around June, and then we developed the organization from there, and now, mashallah, we have around 800 people on board. So it's all about the journey you were talking about. Okay, so mashallah, you're carrying a very successful journey. People thought success supposed to be like this, but how you take challenges and make them your strength during this journey? I take every challenge as a very interesting venture, right? So nobody, I think, would like to work on the same project time and time again. So when I started my career as a chief financial officer, I found this annual budget exercise and reporting exercise was very monotonous. And I always look for the challenges that, okay, what I can do other than the financial aspect of the organization. So developing a life business, and one good thing we had with AdamJee was his brand position. We had a very strong brand already present for the last 60 years in the market. So as far as positioning brand was not that challenge, but the organization development in the initial years of AdamJee Life was really a challenge. Right? Hollard was a distant partner. Technically, they provided the services for the reinsurance and the product development. But as far as the overall organization development is concerned, that was a pretty good challenge. The recruitment and the setting up the compensation structures and the regional structures. And in life insurance, setting up the compensation and incentive structure is a very big challenge in initial years, right? You run a very high cost in the initial years. So to balance out those initial years cost and making sure that you break even as quickly as possible was really a good challenge. And since it all involves financial acumen, so I liked it very much. And as I said, that I always look for the new things. And with the entrepreneur background, setting up the organization and it's I found it very interesting. Yeah. Okay. So, AdamJee लाइफ इंश्योरेंस विजन कोर वैल्यूज थोड़ा सा इस पे रोशनी डालें. देखें, विजन तो हमारा जो इनिशियल सेटअप हुआ था कि वी वांट टू बी अ ग्लोबल कंपनी. ठीक है, वी वंस वी आर सेटल्ड एंड वेल सेटल्ड इन पाकिस्तान, वी वांट टू
carry on our operations and spread these operations outside Pakistan. Like general insurance, we are also operating from the Dubai, right? So we very much want to be seen as a global organization. दूसरी बात ये है कि we always want to remain, as I said, we are the very late entrant in life insurance. हमसे पहले जुबली और ये few 15-20 साल से exist करती थी. So to compete with them was a very big challenge. तो एक vision तो हमारा ये है कि we should always remain in the top 3 life insurance companies, और माशाल्लाह वो हमने achieve किया है within the span of 6-7 years, and we want to continue that. We want to remain in the top 3 position. We want to capture market share of around 25-30% in next 5 years. We want to reach to our asset size, fund size to 100 billion as quickly as possible in next 5 years. We are now sitting at 30 billion. I'm trying to communicate this vision to my employees. Is to inculcate life business in the living benefits, right? You cannot always talk about death, and the life business should be a part of the overall ecosystem, right? Life is a very big word, and you can see life in your daily activities. So AdamJee Life should be seen as a part of the ecosystem of the life, from where the life begins and where the life ends. So between the beginning and the end, there is so much thing we can do. When people will start seeing us as a part of the ecosystem, and they will attach with us, they will associate with us, and will try to understand what we are selling. And they should not always look us as selling benefits at the time of death. So one of the vision is to people should start seeing life companies as a part of the ecosystem, offering life benefits, contributing and improving the quality of life, the standards of life, the healthy life. The market share, as I said, to remain within the top 3, and having a market share of 30% next 5 years. So these are the overall objectives and vision. And the other thing which is very close to my heart is the way customer see life companies. The greatest challenge is that there is a trust deficit with the customer. Life product is always sold. It's not purchased. It's not bought. It's a push product rather than a pull product. And that's because of we made it so complicated. The life product, we made it so complicated. It's difficult to understand for an individual that, okay, what are the dynamics of the life product? What's the maturity value? How my investment would look like? What's the value proposition of the benefits the life company is offering to us? So we want to make it simple and see people start trusting us. And there are other factors in this trust deficit. Is a servicing factor. We should accept that the servicing standards of the life company is not up to the mark as far as the underwriting and the claim settlement is concerned. There is so much improvement in the last 3-4 years with the help of the technology, with the help of the awareness and training. But I would like to see it going further up. We should improve our servicing standards as far as the underwriting, the turnaround time for the payment of the surrenders and the maturities and the claim settlement, and to make this product very simple. So once we do that, my personal dream is to see when customer himself or herself come to our office and our branches or our outlet and say that, okay, I want to buy this product. I understand this and I want to buy this product. That time would be a turnaround time. That time I want to see, that's my vision, that people start trusting us, and instead of pushing all the time, there is a paradigm shift towards the pull side of this dynamics. Dynamic. So how many jobs your company created? As I said in the beginning, right now we have around 850 people on board. Okay, 800. So remaining in top 3,
एज यू सेड कि यू आर द लेट कमर्स इन दिस सेक्टर, तो वो क्या स्ट्रैटेजी थी जो इतने फास्टली आप? Yes, number one, as I said, is the brand positioning. We already had an established brand, which was AdamJee. AdamJee. They were the pioneer in the insurance business in Pakistan. Last 60-65 years, जब से पाकिस्तान आई थिंक बना है, Okay. तब से ये ब्रांड मौजूद था. प्री पार्टीशन भी AdamJee was a known entrepreneur. तो ब्रांड हमारा बहुत हेल्प किया हमें. ग्रुप हमारी स्टैंडिंग बहुत अच्छी थी निशाद ग्रुप की. आवर स्पॉन्सर्स आर वेल नोन. जो हमारी बैंक थी अपनी ग्रुप की, MCB बैंक, नाउ वी हैव MCB इस्लामिक बैंक, उन्होंने हमें काफ़ी हेल्प किया. बिकॉज 2008 and 9 वो पीरियड था जब बैंक इंश्योरेंस बिजनेस जो है वो प्रोग्रेस कर रहा था. एंड दैट वाज अ न्यू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल. और उसमें उसके बाद तमाम इंश्योरेंस कंपनी ने काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ किया. तो उसमें हमें बेनिफिट ये था कि हमारे ग्रुप के पास ऑलरेडी एक बैंक मौजूद था, MCB बैंक, एंड वी हैड अ चांस टू सेल आवर प्रोडक्ट्स, distribute our products from the banking channel. तो MCB, yes, number one the brand recognition, brand position, और दूसरा जो बैंक हमारे ग्रुप के साथ था, ग्रुप की स्टैंडिंग इटसेल्फ, स्पॉन्सर्स की स्टैंडिंग इटसेल्फ, उन्होंने हमें काफ़ी हेल्प किया तेज़ी से तरक्की करने में. और विद इन 6-7 years we were among the top 3. Okay, great. So, what is leadership to you? देखिए, मेरी नज़र में तो लीडरशिप 3 इसके एलिमेंट्स हैं स्ट्रॉन्ग. वन इज़ द इम्पैक्ट, कि आपका लीडरशिप का इम्पैक्ट क्या है, ठीक है. एंड इम्पैक्ट मीन्स द गेटिंग रिजल्ट्स. आपने लीडर ने खुद से रिज़ल्ट प्रोड्यूस नहीं करने होते, बल्कि आपकी ये जो टीम होती है, जो ह्यूमन रिसोर्स है, विच इज़ दी मोस्ट प्रीशियस एसेट, उस पे आपको लीडर को काम करना चाहिए, सो दैट दे शुड स्ट्राइव टुवर्ड्स अचीविंग ऑब्जेक्टिव और गेटिंग रिजल्ट्स. सो आपका लीडरशिप का इम्पैक्ट ऐसा होना चाहिए सो दैट पीपल लुक्स फॉरवर्ड to achieve their objectives or impacting the overall performance of the organization. And then आपको how do you inspire? Number one is that these are 3 I's: impact, then inspire. कि आप अपना पैशन कैसे स्प्रेड करते हैं, जो आपका विजन है, जो आप चाहते हैं, जो आप अचीव करना चाहते हैं, वो पैशन नज़र आता है, लोगों में नहीं आता. लीडर में सेल्फ नज़र आता है, वो उसको उस पैशन को स्प्रेड करता है या नहीं करता. सो वो इन्फ्लुएंस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. इंस्पायर के इम्पैक्ट के बाद जो इन्फ्लुएंस है, दैट्स आई थिंक मैंने इंस्पायर कहा, लेकिन नंबर 2 इज़ इन्फ्लुएंस, कि वो आप अपने जो विजन है उसका इन्फ्लुएंस कितना है, कितना स्प्रेड कर सकते हैं उसका. And then how do you inspire your customers and your teammates and your employees? They look forward to you as a mentor, as somebody to inspire with. So these 3 are very important categories. लेकिन I would say कि 2 चीज़ों पे अगर हम concentrate कर लें, एक आपकी quality human resource. आपको हमेशा हम स्मार्ट पीपल हायर करने चाहिए. जो आप खुद हैं उससे भी ज़्यादा स्मार्ट पीपल आपको हायर करने चाहिए, सो दैट दे गिव यू the insight and ideas, they speak out their mind. आपको उनको फ्रीडम देनी चाहिए, एम्पावरमेंट देनी चाहिए. सो दैट ह्यूमन रिसोर्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन कैसे आप उसको मैनेज करते हैं फॉर एनी लीडर. एंड देन योर प्रोसेसेस, अगर आपके ह्यूमन रिसोर्स अच्छे हैं, दे विल हेल्प यू इन डेवलपिंग अ वर्ल्ड क्लास एक्सेलेंट प्रोसेसेस. और ये जब 2 चीज़ें होंगी तो आपकी कस्टमर लॉयल्टी, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ये खुद ब खुद आपके साथ चलेंगी. और टॉप लाइंस जो हैं वो सिर्फ ट्रांसलेशन होती है. टॉप लाइन पे आप नंबर डे 1 से आप नहीं फोकस कर सकते. अगर ये 2-3 चीज़ें आपकी हैं तो टॉप लाइन खुद ही आ जाती है. तो सर, रिटेंशन ऑफ की पीपल इज ऑल्सो वेरी चैलेंजिंग थिंग, एंड हाउ यू रिटेन योर की टैलेंट इन योर कंपनी? देखिए, आप किसी से भी पूछें तो AdamJee लाइफ में लोग बड़ा फ्री महसूस करते हैं अपने आप को. वी आर वेरी फ्लेक्सिबल इन एवरीथिंग. आवर कल्चर इज़ वेरी फ्लेक्सिबल. 2 कुछ वैल्यूज़ हैं जो सबके पास होती हैं, लेकिन दे फील वेरी एम्पावर्ड
वो डिसीजन खुद ले सकते हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए, एंड वी ट्राई टू मेक देम हैप्पी, नॉट ओनली फाइनेंशियली बट दूसरी चीज़ों में कि उनके कैरियर ग्रोथ है, प्रोग्रेशन अवेलेबल है, ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़ है या नहीं है, और रिकग्निशन है या नहीं. At the end of the year, if somebody is performing, is there a recognition for that or not? So these are very important things for the retention. And AdamJee focused on mentoring, coaching, trainings. देखिए ट्रेनिंग तो हमेशा लाइफ इंश्योरेंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, बिकॉज वी आर अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यू आर सेलिंग अ कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट इन द मार्केट, सो ट्रेनिंग इज़ अ बैकबोन ऑफ एनी लाइफ इंश्योरेंस. अगर वो आपकी ट्रेनिंग स्ट्रक्चर, ट्रेनिंग डिपार्टमेंट का स्ट्रक्चर ठीक नहीं है तो आप सस्टेन नहीं कर सकते बिजनेस को. सो ट्रेनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो नॉट ओनली फॉर द सेल्स पीपल बट द एंटायर बैक एंड पीपल. तो वी फोकस वेरी मच ऑन ट्रेनिंग. वी सेट असाइड स्पेसिफिक बजट्स. जो हमारे की लीडर्स हैं, की परफॉर्मर्स हैं, उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं कि उनको किस ट्रेनिंग्स की नीड है, एंड वी मेक श्योर दैट ही इज़ एबल टू टेक अप द हायर चैलेंजेस, और दे look forward to go to the next level and perform. Okay, so what are the key challenges do you think a business leader face in Pakistan? देखिए रिसेंटली तो अब इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, काफ़ी इकोनॉमिस्ट ने अभी ग्लोबल रिसेशन तो प्रेडिक्ट कर दिया है. हाँ, पाकिस्तान में भी काफ़ी. हाँ जी. अब जो फाइनेंशियल टाइटनिंग है, इंटरेस्ट रेट जो राइज हो रहे हैं, सो आई थिंक नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स तो बड़ी टाइटनिंग नज़र आ रही है फाइनेंशियल कंडीशन में. असद उमर साहब ने भी कह दिया है कि बहुत महंगाई होने वाली है और ज़्यादा चीखें जी. देखिए इंटरेस्ट रेट अगर राइज होगा, आपकी करेंसी डिवैल्यू होगी, तो वो डिस्पोजेबल इनकम पे तो प्रेशर आएगा, और जब डिस्पोजेबल इनकम पे प्रेशर आता है तो लाइफ इंश्योरेंस की प्रायोरिटी वैसे भी, जैसे मैंने कहा कि इसको पुश करना पड़ता है, हाँ. तो इसको सेल करना और मुश्किल हो जाएगा. मुश्किल हो जाएगा इसको सेल करना, और एक चैलेंज रहेगा. इसके अलावा जो यूनिवर्सल चैलेंज है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के लिए पाकिस्तान में, वो एक कस्टमर का ट्रस्ट डेफिसिट है. वो यही समझते हैं कि इधर हमारे पैसे जो हैं वो बनते नहीं हैं, और ये आखिर में हमें कुछ नहीं मिलता. सो ये एक टर्न अराउंड, ये अवेयरनेस की और अपने प्रोसेसेस की को सही करने की और अपनी सर्विस को इम्प्रूव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है चैलेंज के साथ. और इस पे मैं कह रहा हूँ सभी काम कर रहे हैं, सभी को इस चीज़ का एहसास है. जितने भी बड़े इंश्योरेंस हैं, छोटे भी हैं, टेक्नोलॉजी की हेल्प से वो चीज़ें करने जा रहे हैं, और हम भी कर रहे हैं इसमें कि टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए हम कितना अपनी सर्विस स्टैंडर्ड्स को बेहतर कर सकते हैं, किस तरह कनेक्ट रह सकते हैं कस्टमर के साथ. ये ना हो कि बस साल में एक दफ़ा हम कस्टमर के साथ कनेक्ट रहें जब उनका प्रीमियम ड्यू हो या फिर उनका कोई क्लेम आ जाए. सो इट्स इम्पॉर्टेंट दैट वी शुड रिमेन कनेक्टेड विद द कस्टमर्स. तो ये एक चैलेंज जो आता है ट्रस्ट डेफिसिट का, इसको इसी तरह ख़त्म किया जा सकता. फिर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज है, वो हमें बिकॉज ऑफ द इंटरनेशनल प्रेशर्स पाकिस्तान इस पे बड़ा फोकस्ड है, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में ज़्यादा है. अब क्योंकि हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो हम पे भी प्रेशर आता है कि हम भी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग्स की जो रेगुलेशंस हैं उसको इम्प्लीमेंट करें. और अब देखें ना, लाइफ इंश्योरेंस बेचते वक्त आप कस्टमर को जब कन्विंस करते हैं तो उसको और मज़ीद डिफ़िकल्ट नहीं बना सकते कि आप अपना बिज़नेस भी बताएं, आप अपने बिज़नेस के रिटर्न्स भी दें, ये पैसा कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया. आई एग्री के होना चाहिए, लेकिन इसको थोड़ा सिंप्लीफाई होना चाहिए लाइफ इंश्योरेंस में. तो ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज हो गए, अब फिर ये साइबर सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, और सेल्स टैक्स है, ये तो रेगुलेटर साइड के चैलेंजेस हैं. सर, डू यू बिलीव इन वुमेन एम्पावरमेंट, एंड इफ यस देन व्हाट स्टेप वुड यू रिकमेंड टू एम्पावर वुमेन इन द वर्क एनवायरनमेंट? और आप देखें हमारा जेंडर बैलेंस प्रोबेबली सबसे अच्छा होगा. 850 में से 100 तो होंगी फीमेल. सिर्फ आप बैक ऑफिस 850 से 100 भी कम नहीं है. देखें एनीथिंग अबव 10% इज़ अ गुड रेशियो. ठीक है, अगर आप हमारे बैक ऑफिस में भी देखें, प्रिंसिपल ऑफिस में, तो यू विल फाइंड लॉट ऑफ वुमेन्स. एंड मज़े की बात यह है कि वो फीमेल आर वेरी कंफर्टेबल वर्किंग हियर, वो छोड़ के नहीं जाती हैं. ठीक है, बिकॉज ऑफ द कल्चर एंड द वैल्यूज़ वी इनकलकेट. ठीक है,
जो एक इंक्लूसिवनेस का हमारा वैल्यू है, बड़ी एक रिटन वैल्यू है हमारी, कि हमने ये जो इंक्लूसिवनेस को बड़ी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। सो कहीं भी हमने इसको चीज़ को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है। So Harvard Business Review research tell us that EQ, emotional intelligence, important than IQ. Do you agree with it? Definitely, I think more important than Okay. IQ. EQ greatly complement IQ in actually getting the results and positive results. Okay, great. So any achievement you are proud of? For myself or for the company? For yourself or company, whatever you want. CEOs are heroes. देखिए, आई एम वेरी थैंकफुल टू द गॉड के मैं बड़ी तेज़ी से ऊपर से नीचे आया हूँ। तो यस, आई एम प्राउड ऑफ द जर्नी विच आई हैव अंडरटेकन। इसके अंदर पर्सनल अगर करेक्टरिस्टिक की बात करें तो आई बिलीव के I have one strength, and that strength is to produce a win-win solution. I have a very good negotiation skill, so I'm proud of that. That I'm able to solve most of the problems. So, what's the toughest decision you have ever made, and what you learned from it? देखिए, I think अगर personal पूछें तो yes, the toughest decision is to decide whether I have to migrate to Canada or not with my family, right? Because my family and spent last 4 years in Canada, and there was a tremendous pressure on me that I should also move to Canada and start a professional journey there. If you go to Canada, you will naturally incline towards their quality of life. The weather I would say I love the weather in Canada. So yes, you will inspire. आप चाहेंगे कि yes, you want to spend there. So that's the toughest. But the problem is जो respect और जो recognition आपने पाकिस्तान में earn की है, आपने जो qualification यहाँ से ली, आप जो लोग आपको जानते हैं, आपको जो मोहब्बतें मिलती हैं, उसको sacrifice करके एक better quality of life की तरफ जाना, ये इसको balance करना, it was a toughest decision, and I chose the other way. No, I want to live in Pakistan जहाँ मुझे लोग जानते हों, जहाँ मैं बात कर सकता हूँ खुल के, जहाँ फ्रीडम हो अपनी प्रैक्टिस की, और जहाँ प्रोफेशनल अलाइनमेंट आप इंजॉय करते हैं. सो यस, दैट सेक्रीफाइस करना, वो I sacrificed my citizenship, my permanent residency. So that was the toughest challenge in my life. That's why we say believe in Pakistan. Yeah. And how you manage your anger and stress? By deep breathing and meditation. I am a very firm believer of meditation benefits, और ये ट्राई करना चाहिए लोगों को. Breathing, मेरा ख्याल है most of us don't breathe correctly. So whenever you are in anger and stress, you should take a manual guide that how you should breathe correctly. So because I practice meditation, तो वो मुझे help मिलती है उसको anger और stress को control करने में. Sir, success को कैसे define करेंगे in a single phrase? देखें, बड़ी relative है. सक्सेस क्या है? आपके हैप्पीनेस है. इफ़ यू आर इंटरनली एंड स्पिरिचुअली वर्ल्डली हैप्पी, अगर आप कंफर्टेबल हैं, आप इसमें, मैं ये नहीं कह रहा कि पैसा नहीं होना चाहिए या फाइनेंशियल स्ट्रेंथ नहीं होनी चाहिए, वो तो होनी चाहिए टू हैव अ कंफर्टेबल लाइफ, ठीक है. बट साथ साथ आपने ये देखना है कि वॉट एवर यू आर डूइंग, हैज़ इट गिवन यू एन इंटरनल हैप्पीनेस, इंटरनल सेटिस्फैक्शन as a good human being or as a balanced human being. अगर आप रास्ते में देखें तो दरख्त के नीचे दो मज़दूर बात करते हुए भी हंसते हुए आपको नज़र आएंगे. इट्स देयर हैप्पी मोमेंट. और उस वक्त आप किसी और प्रेशर में होंगे तो प्रोबेबली दे आर मोर हैप्पियर देन यू एट दैट टाइम. सो आप उस हैप्पीनेस को सस्टेन कैसे किया जाए? इफ़ यू हैव बीन एबल टू सस्टेन योर सेटिस्फैक्शन मोमेंट्स, आपके जो एंगर के और एंजाइटी के मोमेंट्स कम हैं लाइफ में, एंड मोस्ट ऑफ योर मोमेंट्स इन लाइफ आर ऑफ द इंटरनल एंड स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन
and you live a comfortable life and you've been able to leave a better generation. आपसे बेहतर जनरेशन अगर आप छोड़ के जा रहे हैं, उसमें आपका कंट्रीब्यूशन है, वेदर वो आपकी अपनी डिसेंडेंट्स हो, अपनी लाइनेज हो, या दूसरों के लिए आप करते हो. इफ़ यू आर लिविंग अ बेटर वर्ल्ड, बेटर जनरेशन, उसमें आपका मिनिस्ट्रियल भी कंट्रीब्यूशन है, then that's a success. Apart from digits, do you like to read books and any favorite books? Yeah. देखिए, ज़्यादा मैं फिक्शन पढ़ता हूँ. Fiction. मैं ये पर्सनल डेवलपमेंट की चीज़ें मुझे बहुत रिपीटेशन लगती है कि की फॉर सक्सेस और हैबिट्स ऑफ द इफेक्टिव पीपल, और ये बहुत रिपीटेशन मुझे इस पे महसूस होती है. तो यस, आई एम ए फिक्शन लवर. मोस्टली आई रीड सस्पेंस एंड लॉ साइड की, अगर जैसे जॉन ग्रेशम हो गए और जेम्स बेकरसन हो गए, इनकी सस्पेंस जो मूवी फिक्शंस हैं, आई लाइक दैट. ठीक है, बट माय फेवरेट, इफ़ यू आस्क माय फेवरेट बुक, इट्स नॉट द फिक्शन, प्योरली फिक्शन. इट वाज बेस्ड ऑन एन अफ्रीकन स्लेवरी. जब वो यूनाइटेड स्टेट्स जाते, इट्स अ वेरी गुड बुक, रूट्स. तो one must read that book. It's very interesting. Sure. Any message of optimism to youth from your side, please? Message for optimism. Optimism, hope. देखिए, जो ऐसा नॉन स्टार्टर है, अगर आप ऑप्टिमिस्ट नहीं है तो आप नॉन स्टार्टर. यू नॉट, यू हैव टू स्टार्ट योर लाइफ विद द ऑप्टिमिज्म. एवरी डे इज़ अ न्यू डे. आपने यू हैव टू बी एबल टू मोटिवेट योर सेल्फ एवरी डे, टू टेक एवरी डे एज अ न्यू डे. और देखें, इन दिस वर्ल्ड आज जो जिस एज में है, आप देखेंगे कि 2022-23 में लोग ग्रेजुएट्स हो रहे हैं, गुड प्रोफेशनल्स. द रिच क्लास, द न्यू रिच are among the 28, 30, 35. So वो इतनी तेज़ हो गई है वर्ल्ड, और इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं. जैसे मैंने कहा, 7.5 billion people. One side is a challenge, but the other side is an opportunity to do lot of things. बहुत काम करना है. डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर तो बहुत काम है, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं to improve the quality of the life of the people. ठीक है, तो वहाँ पे ये देखना है यूथ को कि जो डेवलपिंग वर्ल्ड है, जहाँ पे गैप्स हैं, वो वहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं. जैसे वेस्ट अफ्रीका है, ईस्ट अफ्रीका है, पाकिस्तान इटसेल्फ. सो ये जो साइड है, इसमें इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है कि यू कांट गो रॉन्ग इफ़ यू फोकस एंड बी डेडिकेटेड एंड डिसिप्लिन. तो ये ऑप्टिमिज्म में दिलवा सकता हूँ कि यस, 7.5 billion people mostly is in developing and growing economies. तो you can't go wrong. There is lot of opportunities. हमारे स्पॉन्सर जो है मियाँ मोहम्मद पंशा साहब, ये वो तो हमेशा से वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द पाकिस्तान इकोनॉमी. ठीक है, ही इज़ ऑलवेज रेडी टू इन्वेस्ट. हमेशा जब उनसे बात करें तो यू विल ऑलवेज सी ऑप्टिमिज्म, चाहे कैसे भी कंडीशंस हों, जो भी चैलेंजेस हों, बट ही इज़ वेरी ऑप्टिमिस्टिक. That's what I can say, that with this growing world, और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इतनी तेज़ है, और उसमें ये मौका मिलता है कि आप बड़ी यंग एज में लोग अपनी ऑब्जेक्टिव्स को, लाइफ ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर लेते हैं. Thank you, sir. Thank you very much. You're welcome.